ગુજરાતીમીડિયા.com આજે વાત કરી રહ્યો છે 3 એવા લોકો સાથે જે લોકો પોતાના ક્ષેત્રમાં બહુ જ સર્જનાત્મક કામ કરે છે. એક છે દેવાંશ પટેલ, એમની સાથે છે ચંદન રોય સન્યાલ, એ લોકોની ઓળખાણ હું આપું છું, અને સાથે છે મોહન કન્નન. એક છે સંગીતના માણસ, એક છે એક્ટિંગની દુનિયાના માણસ, એક છે જે પહેલાં પત્રકાર હતા અને હવે છે ક્રિએટિવ પ્રોડ્યુસર. અને એ લોકો એક બહુ જ રસપ્રદ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે, ધ પ્લેબેક સિંગર. આજે આપણે એમની સાથે એ વિશે વાત કરવાના છીએ. एज अ डायरेक्टर शुरुआत कर रहे हैं जी, और आप एक फिल्म एंटायर प्रोजेक्ट ऑन योर शोल्डर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एंड यू आर द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म द प्लेबैक सिंगर. व्हेन आई से दिस, द फर्स्ट फिल्म जो मेरे जहन में आती है किसी प्लेबैक सिंगर की कहानी जिसमें बताई गई थी वो थी अभिमान. मैं आपसे पूछूं तो प्लेबैक सिंगर ये फिल्म क्यों और कहाँ से ये हाउ डिड दिस थॉट कम टू यू? तो मैंने जब ये कहानी लिखनी शुरू की, इंस्पिरेशन एक्चुअली 90s में मैं बड़ा हुआ, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब हम अब आज के दौर में देखते हैं वो बहुत कुछ सिंप्लिसिटी चली गई है. देयर आर मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, एंड वर्ल्ड हैज़ बिकम इवन मोर बिगर, फैलते जा रहे हैं शाखाएँ. तो जब हम बड़े हो रहे थे तो आपको काफ़ी हमारे पास चॉइसेस कम होते थे. अगर आपको कहीं टेलीविज़न तो फोकस बहुत ज़्यादा था. अगर आपको कोई प्रोग्राम देखना है या आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता था, और वो फिर जब आपके पास आती थी तो आप उसका आनंद जो उसको मिलता था, उसका अनुभव जो होता वो अनुभव अभी नहीं है. आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है. कुछ भी कहानी वहीं से शुरू हुई. जैसे आपने अभिमान का नाम लिया, आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग. आप इंटरव्यू के शुरू में ही आपने ऐसी फिल्म का नाम किया जो उस पर आधारित नहीं है ये कहानी, लेकिन संगीत का मुझे बहुत शौक़ है. गाता बजाता नहीं हूँ, लेकिन सुनने का बहुत शौक़ है. गाता भी है ऐसे ही. अरे आज सबसे गवाएंगे हम, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे. हैं ये भी है क्या? हो जाएगा. हाँ चलो, एक्टिंग भी करवाएंगे फिर. हाँ मैं एक्टिंग करूँगा, तुम गाना गाना. तो संगीत जो है काफ़ी मेरे बचपन से मेरे आसपास रहा है, क्योंकि मैं एक बंगाली मिडिल क्लास परिवार से हूँ, तो हम बचपन से फिल्में देखना, नया म्यूज़िक और ये सब काफ़ी आसपास रहा है. तो मुझे लगता था कि अब जब मैं ये फ़िल्म लिखना शुरू की तो मुझे लगा धीरे धीरे वो म्यूज़िक जो हिंदी फिल्मों का म्यूज़िक होता था, जिसमें कहानी के साथ म्यूज़िक जुड़ा होता था, एक सिचुएशन, एक कैरेक्टर की मोटिवेशन, कोई भी. और आज भी वो पुरानी फिल्मों का म्यूज़िक जो बड़े बड़े दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स ने, लिरिसिस्ट जो लिख के गए हैं, वो अभी भी क्यों बजता है? देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, बिकॉज उसका एक कारण था उस म्यूज़िक का उस फिल्म में. मतलब वो ऐसे पिरोया जाता था, जो मुझे लगता है कि आज की फिल्मों से जा रहा है या जा चुका है. आई डोंट नो कि म्यूज़िक है, लेकिन उसको फिल्म से क्या लेना देना है वो समझ में नहीं आता है. तो वो मेरा एक मोटिवेशन था कि एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें हिंदू फिल्मों का वो दौर वापस लाया जाए, जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर, एक लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर, ये सब इन्वॉल्व होकर एक फ़िल्म का एल्बम म्यूज़िक तैयार करें. तो ये कहानी वही है, एक प्लेबैक सिंगर की कहानी है. 90s की फ़िल्म है जिसमें वो प्लेबैक सिंगिंग में बहुत नाम और शोहरत कमाना चाहती है. तो ये वो कहानी है और ये मेरा इंस्पिरेशन रहा है. मोहन कन्नन साहब आपको कहाँ मिले? मोहन कन्नन साहब, एक्चुअली मैं एक फ़िल्म कर रहा था बहुत साल पहले, जो अब्बास टायरवाला साहब डायरेक्ट कर रहे थे. वो इस फिल्म के गीतकार भी हैं जी. तो उस फिल्म में मैं अभिनय कर रहा था और मोहन साहब उसमें संगीत दे रहे थे. तो उस दौरान काफ़ी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन वो दोस्ती बरकरार रही, गहरी होती चली गई. तो जब मैंने ये कहानी सोची तो मैं सबसे पहले इनके पास गया 4 साल पहले. जब मैंने ये कहानी लिखना शुरू की, तब से मैं इनके साथ एक्चुअली इस म्यूज़िक पे काम कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ बिकॉज ही इज़ सो इन्वॉल्व विद द म्यूज़िक. बिकॉज इनको पूरी कहानी, सारे चरित्र, उनका मोटिवेशन, बैक स्टोरी सब मतलब याद है, और उसको फॉलो करके ये इस फिल्म का म्यूज़िक बना रहे हैं. आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट व्हेन यू आर अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, जब आप प्रोड्यूसर होते हो तो when you pick up a project you have to be very choosy, क्योंकि भाई पैसा लगने वाला है. It's very important for everyone to know that producers aren't the ones with just investment. They are also creative, they also love cinema, and
I think I'm fortunate that I'm backed by Mr. Pankaj Mamtora, who heads Lone Star Films as the chairman and CEO. And he has a knack, वो भी उसी दौर से गुजरे हैं, the 90s where 90s, you know yeah. the teenage years and stuff like that. So जब ये हमने कहानी सुनी through Chandan, हमें लगा that it was taking all of us back in our teenage days, है ना? तो वो सारी like even हर scene movie के हर it felt as if हम लोग उस दुनिया में है. We are a part of his story. And also another pivotal factor is जो चंदन ने अभी कहा कि beyond being a fabulous actor that he is, उनकी म्यूज़िक को लेकर समझ बहुत ही गहरी है. You know, he's not a musician, but I think he's a student of music, and his consumption of music is something that draws me. And I want to tell your viewers also something, that social media is, you know, places like Instagram and all is not a toxic place. It's a beautiful place, because that's where I found out Chandan's flair for music. On every picture he has a song, you know, and I realized that you know, depth hai. So I think mixture of this and the story is what drew us to a film like this. Mohan, I want to ask you that a story which is about, you know, a singer, आप खुद गाते हैं, संगीत बनाते हैं, जब एक कहानी आप पढ़ते हैं किसी सिंगर के बारे में, तो एज अ पर्सन जो खुद उस क्षेत्र में काम कर रहा है, कितना रिलेट कर पाते हैं? और क्योंकि आपने बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं, आपने 90s भी देखा है, वो हमने वो दिन भी देखे हैं जहाँ जब वो कैसेट फंस जाती थी तो वो पेंसिल से ऐसे करके यू नो वी हैड टू ठीक करना पड़ता था. हमने वो दिन भी देखे जब रिदम हाउस बंद हो गया और फिर हम एप्पल म्यूज़िक पे वो सब गाने ढूंढने लगे जो हमें वहाँ जाकर ढूंढना अच्छा लगता था, यू नो. सो हाउ डू यू फील एज समवन who is genetically a musician? Be relating to the script is one thing. That's one side. Like you feel like my story has gone through this, or someone I know, their story has gone through this. That's one side. The other side is what can you do with the film? How can you contribute? That's what I look at first. Okay, is this film something that I can imagine myself adding value to, and also believing in it as much as possible? Because when I read a script, I always think about, might be a great film, but I might not be able to add value. It's a possible situation, and it's happened a couple of times. In this case, it's right up my alley, something that I would love to do. Because Chandan put that faith in me, or you know, the trust in me to speak to me right from the time that the script started getting made. So for me, I feel like I'm involved in the story just as much as in the music, and vice versa. It's that zone. So we're both sort of involved in creating characters, seeing what will happen. So that's a very different happiness. Whenever I've written songs, whether it's composed songs, whether it's for Agni, whether it's for myself, whether it's for a film, I always have a visual in head. It's very weird. Everyone doesn't do it like that. It's not necessary for anyone to do it like that. But I just have a visual in my head. Yeah. So, and the lyrics that call out to me most, I remember the first song I'd sung outside of Agni was Nav. When Amitabh Bhattacharya had written that Leharon ki gardan kas ke dal phandere. So for me it was this image of a like huge wave coming at you, and there's this guy on top of a board lassoing that wave. It's a beautiful visual, right? And you're singing it and you want to express that. So for me, visual writing is just the best thing for me. So all of this put together, plus the fact that Chandan is a dear friend, and I truly respect what he wants to create, his sensibilities with music, and we have that understanding where we can work with. So same with Abbas. Abbas is a genius. The way he thinks, it's impossible for us to think. And he's done situations where मैंने dummy lyrics लिखे, like क्या कर रहा है, क्यों, मतलब you can't be my friend and do this, you know, people will not want to speak to me about this, and he's written fresh lyrics for it, and it's just like, oh, I never thought of it like that. Same thing has happened with us with the film. Tune बनाए, and then fine, we both like the tune, then Abbas says लिखता हूँ, and it takes him about 3 minutes, and then WhatsApp पे एक पूरा गाना आता है. Wow. Yeah, I mean. Really? Yeah, it's not even an exaggeration. Sometimes it's written songs in 3 minutes only. उतने टाइम में तो गाना हम लोग गा भी नहीं सकते. He's mad. But these are the situations where, you know, you're so excited. And when you say Rhythm House, I have to tell you. So when I first joined my first job, I think I had a salary of what, 16,000 rupees a month.
फर्स्ट बी स्कूल to 1999 was all right, could survive. And I got my first credit card जिसका लिमिट था 17,000. So within 2 months of joining, वो management trainee से I had gotten, I had come to Bombay and they gave my first credit card. So I went to Rhythm House, spent 17,000 in one day, all on music shows का DVDs. I love live shows. So all of the big guys, Peter Gabriel, Pink Floyd, Doors, all of those shows. So at that time I used to get VHS. So उन सब पे I spent my entire 17,000 on that. Then called up my mom and said, "I've got this." She said, "Okay, you're a banker. You should know better how to use credit cards." No chance. But that's how much I miss Rhythm House. That kind of zone of when, like, one of the things that we are working on is a ghazal. There's a character who's supposed to be a big ghazal singer. So for me, I used to listen to Ghulam Ali only, because in school मुझे लगता था कि कोई अगर डिफिकल्ट चीज़ें गाएगा तभी अच्छा सिंगर है, हो ही नहीं सकता नहीं तो इसमें कलाकारी होनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स गुलाम अली साहब आउटस्टैंडिंग. देन माय फ्रेंड केम एंड टोल्ड जगजीत सुन, से पागल हो गया, इतना सिंपल, नहीं ये क्या है गजल. इसे एक कैसेट देता हूँ, सुन ले, बुखार चढ़ेगा तुझे. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. कौन सी वाली कैसेट सुनी थी? देयर वाज वन वेयर आई रिमेंबर इट वाज अ लाइव शो वेयर ही हैड डन सरकती जाए रुख से नकाब इन द US. द एंटायर ऑडियंस वाज इंडियन ऑफ कोर्स, बट ही हैड डन दैट. इट वाज अ लाइव शो का कैसेट. एंड आई रिमेंबर साइड बी स्टार्टेड विद सरकती जाए एंड ही हैड डन दैट फॉर 15 मिनट. बीच में चुटकुला भी सुना रहे हैं. वो भी चल रहा है. आप ये कैसे गाते हैं यार. एंड देन दैट इज इट, दैट बुखार नेवर वेंट. देन ऑल हिज एल्बम्स, एवरीथिंग, इवन होठों से छू लो तुम, ऑल हिज फिल्म सॉन्ग, एवरीथिंग. सो दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू दिस कैरेक्टर हियर टू सी वेदर दैट कैन हैपन. सो लेट्स सी. Wow, this is so beautiful. I mean, I'm just jealous that I'm just listening about it from you guys and No, let this get over. You listen to it also. wow, this is lovely. That's gorgeous. And वो तो गाते ही हैं, आप संगीत सुनते हैं. When you say playback singer, मुझे जो सबसे पहले रेफरेंस याद आया वो अभिमान था. While I was listening to your answers, मुझे एक दो और फिल्में याद आई. आपको कौन सी मूवीज याद आती हैं जब you think of a story that is about a playback singer? सो स्टोरी अबाउट अ प्लेबैक सिंगर, अभिमान के अलावा थोड़ा बहुत उस दुनिया को हमने अकेले तुम में थोड़ा देखा था. किसमें? अकेले हम अकेले हम. उसमें भी इज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही इज ट्राइंग टू क्रिएट दिस म्यूजिक एंड ही इज पुट डाउन बाय दिस थिंग. एंड रिसेंटली आई वाज थिंकिंग like it's not about her, but in Satya also Urmila was a playback singer. Even Rockstar. Yeah. I mean that's a love story. Very different from still, but he's a this, singer. But that kind of zone. And I hate that one line that they say, in Rockstar, कि जब तक तुम्हें you don't face grief, जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटता तब तक कुछ तुम्हारा गाना नहीं बनेगा. हमने कुछ भी चल रहा है. Anything. दिल टूटे बगैर भी गाना तो बन ही सकता है. बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं. So another story for after. Another story for after, yes. अभी तो यही एक दो तीन नाम आ रहे हैं हिंदी फिल्मों में. कितने झगड़े हुए आप लोगों के बीच? काम करते वक्त तो अजीब ही नहीं हुए हैं. पता नहीं. Oh my God. मैं हमेशा डरते रहता हूँ क्योंकि क्या होता नहीं वो सब नहीं है. मैं डरते रहता हूँ क्योंकि क्या होता है कि स्क्रिप्ट आई हैव सीन ऑल द वेरिएशंस सिंस 2017, राइट? एंड ही इज वर्कड ऑन इट, इंप्रूव्ड इट. आई वेंट टू अ टेबल रीड. फिर अचानक से एक सडनली टेबल रीड में मैं देखता हूँ स्क्रिप्ट में है यहाँ पे इंसर्ट सॉन्ग समवेयर. लाइक ये कौन सा गाना है, ये क्या है? टेबल रीड रोक दे मैंने. लाइक रुक जाओ ये कुछ नहीं, ये बीजी है, ये आपका नहीं है, इट इज समथिंग एल्स. सो those are the only times when I have issues with him, or when he's looking at casting. So this film for us, we have had to look at casting, not for the main characters, of course that's entirely his call and all of that, but he's asked me for a couple of things. अच्छा ये गाना अगर ऐसे बनेगा तो should we have this person who's only coming in as a singer, should that person's character be cast in a particular manner? So that we spent some time on, and maybe there we've had differences of opinion, but he's too nice a guy. झगड़ा करना मुश्किल है. Abbas is not like that. Abbas can fight with him. I love it. I love fighting with Abbas also. But he's too good to fight with. उसको वो पिक के देंगे तो क्या ही लड़ लोगे. This guy is a nice guy. He's very sweet. नहीं हो जाएगा, चिंता मत करो. Type guy. He knows how to get his work done without getting any fights. Very smart fellow. पर इस फिल्म का संगीत जो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मतलब हिंदी फिल्मों की जो आत्मा होती थी अभी भी पुराने, जैसे मैंने बताया ना, तो इस फिल्म के गाने वैसे ही होते हैं. हमारे 6 गाने हैं इस फिल्म में और वो गाने वैसे ही होंगे जो फिल्म के साथ
मैं जब लिख रहा था मैंने वो गाने उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये गाना है और ये गाना ये चरित्र इस टाइम गा रहा है तो क्यों गा रहा है, वो दिन है कि रात है, यू नो ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स, और वो क्या फील कर रही है या वो क्या फील कर रहा है. सो ऑल दिस हैज़ गॉन थ्रू इनटू द प्रोडक्शन ऑफ these songs, you know, and I think it will show, it will, जैसे कुछ फिल्में होते हैं जैसे कैच मी इफ़ यू कैन, अगर आप देखें तो वो फिल्म आप कभी भी कहीं से भी रुक के देख सकते हैं ना. तो मेरे लिए ये वो फिल्म होनी चाहिए जहाँ पे कोई कहीं भी रुक के एक सीन या गाना लगा के देखे और बोले यार इसका वो एक्टिंग अच्छा लग रहा है या उसमें वो म्यूज़िक अच्छा लग रहा है या इस पर कपड़े अच्छे हैं. अच्छी फिल्म का वो होता है ना एक, यू कैन जस्ट वॉच इट एनीवेयर. It's a good film, that's all. Exactly. So we're trying to do that with this. You know, हमने अब तक जितनी भी बातें की हैं, हम सब ने एक से ज़्यादा बार 90s का म्यूज़िक, पुराना ज़माना, म्यूज़िक इंडस्ट्री पर से इतनी बदल चुकी है, एंड देन सोशल मीडिया, लाइक anybody and everybody thinks that they can sing, and you know, जो बदलाव आए हैं संगीत के क्षेत्र में, आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू से, बिकॉज आप सब अलग अलग फील्ड से हो और आप का खुद का एक पर्सपेक्टिव है जो बदलाव आए हैं उनको लेकर. तो हाउ डू यू सी दीज चेंजेस एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट यू फील दैट नहीं बदलना चाहिए था, और व्हाट आर द चेंजेस यू आर हैप्पी अबाउट? I mean, there's a good and bad, right? Of course. The two sides of the coin. I'll first talk about the good side of the coin. And the good side is talent उभर के आया है since a few decades, right? Which is leading up to अभी हम जहाँ हैं. There are lots of talents that we couldn't find और तराशे नहीं गए थे. I think they have their own voices now, and now they don't need a platform. Social media has become a platform. You can find a great talent if you are just surfing your mobile also. Mohan can just call someone if he likes someone. I don't know, I mean, I don't know his process, but I'm just saying in generic, you know, there's so much out there. So that is a good thing that has happened to artistry as a whole in music. Of course, technically तो काफ़ी कुछ change हुआ है. Sorry? He's discovered a lot of talents on Yeah. social media. So technically, I mean, I'm not much aware, but again, on the flip side, the grey part of it is, or the black part of it is that the artistry is marrying algorithms, which is affecting people's natural ability to bring out their talent. So now people don't want to sing a song because they love the mood or the atmosphere. People want to sing it for the numbers they want to get, and I think that should not be the case. My main thing is that if earlier there used to be a lot of barriers, everyone could not make music, क्योंकि you can make music, घर पे बैठे रहो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, बहुत मुश्किल है, पैसे लगते हैं बहुत, फिर कोई और रिलीज़ करेगा, someone has to put money in something XYZ, then TV पे बजना चाहिए, very tough process. Barriers to entry were very high. Now the barriers to entry are ज़ीरो. घर पे बैठ के एक लैपटॉप पे बंदा पूरा गाना मिक्स मास्टर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड करके अपलोड इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरी. दैट्स ऑलवेज गोइंग टू कम विद गुड एंड बैड. इट्स नॉट अ सिचुएशन वेयर ओनली गुड आर्टिस्ट विल डू इट. देयर विल बी पीपल हु कैन डू इट एनीवे, बट इट इज़ फार द गुड फार आउटवेज द बैड. 5000 आर्टिस्ट में से 3 भी अच्छे निकले ना, उन 3 को जो मौका नहीं मिल रहा था पहले उनको तो मिल गया ना. बाकी जो 4900 उनको कोई लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, मत सुनो. अगर अच्छी नहीं तो मत सुनो, कोई इशू नहीं है. These situations also happen with things like softwares, auto-tune, this, that. People keep saying auto-tune is a bad thing. It's not. The idea is that earlier songs were sung, everyone used to be together in one room. जिस टाइम की फिल्म हम बना रहे हैं, already at that time, this is 90s, okay? Already at that time they had moved to half digital. ADAT was what they used to do. But before that, वो किशोर कुमार साहब हो गए, या लता मंगेशकर जी होंगे, जो भी हैं, वो सब everyone used to sing together. तो इनका सब एक दूसरे के साथ मिलाते थे सुर. एक सिंक बहुत अलग लेवल पे होता था. हाँ जी, नहीं जी. सिर्फ सुरों का चक्कर है. एज अ वेरी टेक्निकल सिचुएशन ये है कि अगर ऑल जो आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट पिच. दे आर नॉट अलाउड टू बी नेचुरल पिच. दे आर सब एग्जैक्टली एक्यूरेट, राइट? वॉइस कैन नॉट बी. इट्स नॉट पॉसिबल. इवन सोनू निगम हु विल नेवर गो ऑफ की इन हिज लाइफ, उनका तो चांस ही नहीं है. सुनिधि, श्रेया घोषाल, उनका भी इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल टू बी एग्जैक्टली 440. दे विल बी अराउंड देयर.
So for people when they sing on top, you're now, earlier you were adding all the instruments together. आप किसी भी क्लासिकल कॉन्सर्ट में जाके देख लो, कोई भी सिंगर आपको बेसुरा नहीं दिखेगा, सुनाई नहीं देगा. ठीक है, म्यूजिक कैन बी गुड और बेटर और बैड, बट बेसुरा कोई नहीं गाएगा. आप कोई रॉक शो में जाके देख लो तो सिंगर बेसुरा गाते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मॉनिटर देमसेल्व्स करेक्टली. सब एक साथ सुन नहीं पाते. दैट्स ऑल देयर इज. ऑटो ट्यून इज जस्ट दैट. आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर बैड सिंगर्स कि यार मतलब बोल ही दिया और उसको गाना बना दिया. That's fine if that song works. Some of those songs I also like. Speaker song. Yeah, let's speaker song. That's fine. I think all of it, if used well, is great. If I mean, if someone who's not got great talent is able to use it and make themselves better, why not? It's great. I'm very happy to hear a song that someone else could never have sung. I'm saying, अरे ऑटो ट्यून के साथ मैं गा के अच्छा लग रहा है, रिलीज करूँ ना. The composition has to be good for people to like it, and if people like it, who the hell am I or anyone else to say that ये गंदा है, इसके पास टैलेंट नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइव शो भी देख लेगा अपना कि कैसे करना है. I don't think these benchmarks are of any use to anyone. We are not in a classical field, we are in a commercial field. And जो आपको गाना पसंद आ गया वो गाना अच्छा है, चाहे मुझे पसंद आए नहीं आए, आपके लिए वो गाना अच्छा है. अगर मैं स्टेज पे जाके कल बेसुरा गाऊंगा, लोगों को पसंद है तो सॉरी, आई डोंट केयर. So that's what my understanding is, that you know, if people like it, there must be some good reason for it. There's no point in debating that. And I in fact have a great respect for such artists who use technology, and they know, okay, this is my shortfall, let me sort this out, and let me At least they know where they are going wrong. Yeah. So yeah, it's good. Yeah, it's great. They have the sensibility to correct it. So What does music do to you? What does it mean to you? आप सबका एक personal, I'm not asking this question as someone, who is an actor and now was turning a director, making a film on the story of a playback singer, or I'm not asking this to, Mohan, the singer, the music creator, or Devansh, the creative producer. What does music do to you as, as a person, in person? If I have to add this, it's a funny anecdote which has been told to me by my parents, what music has done to me. As a kid, I don't know how many years I was, but every time Satyam Shivam Sundaram ka gana bajta tha, I would keep quiet. So I think it affected me. I don't know how, I couldn't even remember. But every time I cried and my grandfather or whoever, the elderly would play the song, I would keep quiet. lovely. Was it Shivan? Now imagine at that time, Which rag was that? I'm just trying to remember I don't because know. I mean, Not the Satyam Shivam Sundaram, that song or any song from that film? I mean now I don't even remember, but I think What? कोई भी I गाना think होगा, it how must is be it? Whichever this song was because there. वो morning Yeah, raga and mandir. I heard and that It's story. just connected. Yeah. He's just connected to that. That's it. So as a kid, he must have connected to that tune. Okay. So Since then, since then, so this is what music does to you. it did to me. But I think music also really, I mean, it kind of uplifts the mood, that's for sure, depending on what kind of song you're listening. Changes the energy. It anytime. motivates. I remember as a journalist while I was writing and I couldn't, you've been in that situation where you're framing questions and you're typing all day long and Right now also. with coffee you need some earplugs and play something. True. Set the mood right. Yeah. So for me, I think music for me is like existence. Like I listen to music almost 17 hours a day. I am constantly listening to music. Like if I'm sitting in my car, once I reach home, I always switch on the speaker first before I switch on the lights. And but sote time, and I think when I'm writing or when I'm thinking, everything for me is music. Like to the situation and how, like one of my ex-girlfriends once, she told me कि क्या है everything for you is film and movies and music. हाँ, सब कुछ तेरे दिमाग में वो शॉट आएगा, ऐसे वो म्यूज़िक बजाएगा, फिर पत्ते उड़ेंगे, फिर ये होगा, सब कुछ मेरे दिमाग में ऐसे ही चलता है. I look at life like a movie and everything is like a cut, everything is like a music. It's a good thing, but probably for that person it was not that great. But तो मैं constantly music सुनते रहता हूँ and I listen to all kinds of music. The only music I can't handle is death metal. वो मुझे समझ में नहीं आता है, और एक आध और वो कुछ बहुत ज़्यादा ट्रांस म्यूज़िक मैं नहीं सुन पाता हूँ. But apart from that I listen to everything. Like
I listen to all languages also. I listen to, whether it's like I listen to Marathi radio. I love radio. You know, and I listen to a lot of the local channel music when I'm traveling. Say if I'm in a different part of this country and they have these local stations, I listen to that, what they're playing, and their regional music. चाय की टपरी पे कुछ बज रहा होता है. Yeah, you know, music is, and I got it from my dad, because my dad always used to listen to Rafi and Kishore. I mean, I think everybody's We all parents have used grown to, up yeah. with So these I things, yeah. grew up listening to Rafi, and my uncle, he used to listen to Western music, and everybody loved movies. So मेरे और वो रह गया. फिर मैं भी जैसे बता रहा था, मेरे पास भी अभी भी पूरा एक वॉल CDs का अभी भी पड़ा हुआ है. मतलब I used to travel that time and I used to just go and buy CDs like a भूकड़. CDs, DVDs खरीद के लाता था मैं पागल की तरह. पैसे 50,000 मिले, सैलरी 50,000 मिली तो 35,000 का ऐसे लेके आ गया. तो क्या मतलब है? बोल रहे क्या है, क्या बदतमीज़ी है ये सब क्या है? और वो आई लव स्टॉकिंग लाइक DVDs एंड म्यूज़िक, यू नो, क्योंकि यहाँ पे उतना वो अच्छे म्यूज़िक और वो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ. जैसे लाइक माई विशेज़, लाइक आई वांट टू डू द फाइनल म्यूज़िक मिक्सिंग ऑफ दिस फिल्म एट द एबी स्टूडियोज़. ये मैंने एक डाल दी है मैंने. Fingers crossed. हाँ, कि हमारा फिल्म Manifested. मिक्स होगा. We are going now. Because a friend of mine, he's a designer, and he London back works a again. lot. Creative producer. Yeah. बेचारा. नहीं, Okay, back again. करेंगे. Of course. So anyway, that's music for me. ये तो गाती है. And not many. I mean, if you know what he's saying isn't just coming out of. It's not made up. It is him. You know, the Yeah, word yeah, existence. I can it's in his sense DNA. that. Yeah. It's crazy, and I think that's also one of the most important reasons why we've backed it. Then you add Mohan-Kannan and Abbas Tyrewala's name to it, and it's just a propeller, and boom, it goes. No pressure, man. And trust me, I want to say this. I had discussed this with my roommate or someone like about a decade ago, that when I turn producer, especially the music, when I started my career as I just written one song and as a music coordinator, and that time I had manifested that, yeah, you know, I want to, if the first film is made and if I'm producing it, it has to have music composed by a band. I had no idea this man's gonna walk in my life like that. But for me, music is not like these guys. I can't keep it in the background. For me, music always has to be foreground. So if Coco and I, if we're traveling in a car and there are say 2 people in the back seat, song is playing, some random song, we're probably not even paying much attention to the song. Someone starts talking, we'll switch off the music. We just won't have the music on, because you'll either listen to music or talk. So these guys have also been here whenever we're just chilling, music session's over, we've done, and you want some music in the background? Like, no, just no, because for me, I can only listen to that. Then I'll start either appreciating or hating it. सब कुछ होगा. That comes later, but yeah, for me, music can never be in the background. It just can't. If it's there, मेरे घर पे भी ऐसी है. My parents and we've grown up listening to Carnatic music. तो रेडियो सुबह उठ के रेडियो बजेगा. And Carnatic music will be on. At that point, बातें नहीं होती हैं. मतलब कोई कॉफी, मतलब ब्रेकफास्ट क्या है, कॉफी क्या है, वो भी quietly लेते रहो, सुन रहो. So that is how it was. So for us, it's a different zone, and we love that. But yes, we've lost the ability to just listen to background music. We've got some parts like elevator kind of music, हाँ वो लगा दो, but then that no one wants to listen to any. So that's the only thing we can disregard. We can't do that. So what do you do in parties? Huh? I'm Because usually, then music I'm and then usually party slightly and away from the parties, or I'm thoroughly enjoying the music. There is no problem. That I'm fine. But I can't do this background music situation. That's all. I'll be the only one listening to music, because there are a bunch of us who are talking about the music we're listening to. Sometimes we'll stay. It's not so focused also. Yeah, but almost. No, I understand. I'm just. It's that. But it's not a background thing for me. That's all I'm trying to say. It's like I can't put on music the entire day. I just can't. Either I'm doing that to listen to it. That's a different story. मेरा वो चक्कर. Okay. But I'm actually mostly alone. So it's all just. मतलब मेरे Did you music नहीं सुनता तो मैं read दिमाग between नहीं the चलता. lines when he said that, Mohan? I know lots of other things I'll speak to you about. Again, there's so many things we can only talk about after this is done, unfortunately. But yeah. Lovely.